If you are preparing for UPSC, EPFO, APFC, then one subject or one area which might be causing nightmares to you, as in how to prepare for it, would be accounting, auditing and insurance. चाहे आप यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, this is one core area which everybody is worried about. But trust me, it's very easy. Questions are very basic from this topic. It's all about having the right strategy, and that is what we are going to discuss in this video. Before I start, देखिए किसी भी एग्जाम में सक्सेस लेने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओरिएंटेशन विद विच यू नीड टू स्टडी दैट सब्जेक्ट, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, एंड फॉर दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स इज योर बेस्ट फ्रेंड. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स एपीएफसी के अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज डाउनलोड देम as quickly as possible. The link is given in the description of this video. You will get previous year paper of 2002, 4, 2012 एंड 2015. सारे एपीएफसी के जितने भी पेपर्स हुए हैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे. नाउ द क्वेश्चन दैट माइट बी कमिंग इन योर माइंड इज कि यार एपीएफसी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर, हेरिटेज. तो क्या अगर मैं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस छोड़ दूं, बिकॉज इसमें से ज़्यादा 9-10 क्वेश्चन ही आएंगे. इफ आई डू वेल इन अदर एरियाज एंड लीव दिस, और इसमें से 10 में से 1-2 क्वेश्चन कर लूं, कैन आई स्टिल मैनेज टू क्लियर ईपीएफओ, एपीएफसी? कैन आई स्टिल मैनेज टू compete with the best in the country? अब इस पे मेरा आंसर बहुत ही वाहियात होने वाला है. मैं तो यही बोलूंगा, भैया तू पागल है क्या? अगर आपको मैं एक देसी तरीके में बोलूं तो वही होने वाला है. आई वुड से that are you going nuts if you're thinking that you can clear EPF or APFC without having any idea about account, auditing and insurance? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही होने वाला है, सर इफ यू सी द यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम विच वाज कंडक्टेड इन 2012 एंड 2015, उसमें तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस. सो इट मींस इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. इसका मतलब तो फिर मैं पागल हूं. Guys, yes, if you see the 2012 and 2015 exam, not many questions have been asked from accounting, but then I think you have to take into consideration that the recent exam which was conducted by UPSC for EPFO was EO AO exam in 2021. उसका भी same syllabus था और उसमें accounting में से there were 10 questions. So that's the recent trend, and accounting is important because when you are working as a APFC officer in EPFO, you are required to know about the basics of accounting. So again, coming back to that, I would not recommend. Competition बहुत high है that you skip this topic. Instead, this topic is something that can give you edge. बहुत सारे लोग इसको छोड़कर जाएंगे, but you should be the one who should be getting an edge by scoring good in this component. करना तो पड़ेगा. स्ट्रैटेजी क्या है उस पे चलते हैं. करना तो पड़ेगा. Now, accounting, auditing and insurance basically consist of 3 subjects. अब इसमें से accounting is the most important because that gels with the work profile of an APFC officer also. Insurance, I would say just basics are required. They will not test you on in-depth knowledge of insurance. Some basics of insurance are more than enough. Auditing, I would say yes, it's part of the syllabus if you see the 2015 notification. But I would say leave for now. There was no question on that in 2015. We are not sure whether it would be in the syllabus this year or not. So leave for now. Wait for exact syllabus in the notification and then only go to complete the auditing part. As of now, I think just focus on accounting, the basics of accounting, the conceptual knowledge of accounting and the basics of insurance. That is more than sufficient to prepare for this component as in today's date. अब accounting portion कैसे prepare करें? Right, I said accounting is the most important part. So 10 questions आए थे as I told you in the UPSC EPFO EO 2021 exam. Were these questions tough? If you ask anyone who is from accounting background, you ask them, were these questions tough? The answer would be no. Were these questions numerical based? Because accounting most of the times is tough because it is numerical based. So were these questions numerical based? Again, the answer is no. Were these questions based on deep knowledge? Again, the answer is no. अभी आपने पढ़ा नहीं है. अगर आप कुछ चैप्टर्स पढ़कर अकाउंटिंग के बेसिक्स पढ़ के ही if you will go through the questions that were asked in the exam, you will realize
that they were not tough, they were not based on deep knowledge, and they were not numerical based. So problem क्या है भाई? Why can't we score 100% or if not 100% good marks in the accounting portion? The major problem is that the scope of accounting is very huge. Accounting is a very big subject. If you talk about accounting that is taught to CAs or CFAs or to MBAs, that is a separate subject domain altogether, which you might keep reading for 2 3 years, as in different books for 2 3 years. So the scope of accounting is huge. That is the main problem. People are not able to decide that what is to be read, till what depth it is to be read, what is most important, what is to be left. So uske liye I am giving you a very clear idea. I am telling you first of all the scope of your syllabus. ये 18 चैप्टर हैं in my opinion which forms the scope of your syllabus in accounting. I have divided them into 4 parts. Part 1 from chapter 1 to 6, then part 2 from chapter 7 to 10, chapter 7 to 9, then part 3 from chapter 10 to 14, and then part 4 which is from chapter 15 to 18. This is how we have covered accounting in our course. So इसमें से जो most important है that is part 1 and part 4. The maximum number of questions would be from this part. Part 1 is basically the basics of accounting. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना accounting में, at least do these 6 chapters which are just based upon basics. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ क्रैमिंग नहीं चाहिए. ये 6 चैप्टर तो आप करके ही जाइए. आई थिंक डूइंग दिस ऑल्सो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर देन 50% क्वेश्चंस इन द एग्जाम. उसके बाद पार्ट 4 आता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स. इसमें शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन यू विल रीड अबाउट फाइनल कंपनी अकाउंट्स यू विल गेट टू नो अबाउट शेड्यूल 3. इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम. सो पार्ट 1 एंड पार्ट 4 हैज टू बी डन ऑन प्रायोरिटी. उसमें से भी पार्ट 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पार्ट 2 और पार्ट 2 is basically about accounting in specific areas. In part 1 you will learn basics of accounting. In part 2 it's about accounting in specific areas. कि बोनस और राइट्स इशू में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, बायबैक में अकाउंटिंग कैसे करते हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. if you are not having time or you are not having that patience to complete this, you can leave this. You can leave this at your risk, but I think प्रायोरिटी में लो रखना एक एडवाइजेबल चीज है. देन पार्ट 3 इज अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी एक बहुत कॉमन एरिया है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो इन दैट I think introduction to accounting standards is basic which you should be reading. Apart from that there are 2 accounting standards which are highlighted in blue here. Accounting standard for inventory and accounting standard for property plant and equipment which is important in accounting standards. तो पार्ट 1 पार्ट 4 प्रायोरिटी पे करो, पार्ट 2 छोड़ दो. पार्ट 3 में से अगर कुछ करना है तो चैप्टर 11 और चैप्टर 13 इन योर कोर्स. और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वॉट एवर बुक यू आर रीडिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप पढ़िए. इसमें से क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में. सो एनीवेज दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. So I hope this will give you much clarity about as in how to prioritize and how to proceed to cover the accounting part. मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको. Those have been asked from the accounting. Which one of the following statements about trial balance is correct? These are the actual questions asked in UPSC EPFO EO AO 2021 exam. So ये trial balance में से है जो कि आपका 5th chapter है. Wages paid for installation of machinery is debited to which one of the following accounts? इसका आंसर बी है वैसे. एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13. एज आई टोल्ड यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज व्हाट आर द करंट व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेएबल, राइट. सो विद इन 1 year एंड दिस इज बेसिकली फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स. शेड्यूल 3 में से आप ये पढ़ते हैं. इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम? अगेन दिस इज फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. Which of the following is the first book in which the transaction of business are recorded? It has to be journal. This is again from recording transactions part 1. So you can see that most of the questions that I have showed you are either from first 6 chapters, right, or these blue highlighted chapters. तो ये हमें अच्छे से करने हैं वॉट एवर इज इन ब्लू. और इन अदर वर्ड्स पार्ट 1 एंड पार्ट 4 पूरा करना है. पार्ट 2 छोड़ सकते हैं. पार्ट 3 में से do accounting standards for inventory and property plant and equipment. These are the most important.
ओवरऑल हाउ टू प्रिपेयर मैंने आपको बता दिया है, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे फोकस करना है, एंड फोकस ऑन बेसिक्स. डू नॉट go into too much depth. They are not going to ask you, lengthy numericals, and anyways you will not have time to do those. Do not focus on numerical part, and do practice as many questions, because when we read something, we ourselves feel that we have understood that, but when it comes to application, question को थोड़ा घुमा दिया जाए, then we are not able to apply that concept. So for that you need to do as many practice questions as possible. मतलब मैं हूं तो यार 5-10 हज़ार क्वेश्चंस तो मैं करके जाऊंगा ही एग्जाम से पहले. बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, अगेन टू अंडरस्टैंड दैट नो if you are not able to understand any concept or apply any concept, then you can work upon that. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए सारे, कोई भी चैप्टर खत्म करने के बाद डू गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मैंने पहले आपको लिंक दिया है टू डाउनलोड ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स. And revision is the key. Do not forget to revise, and the best way to revise is again through MCQs, either chapter wise or sectional test and full length mock test. Right? Time would be your biggest enemy. टाइम कम है, नहीं तो अकाउंटिंग 6 महीने में तो कोई भी कवर कर लेगा. सो यूज इट जुडिशियसली, हैव द राइट स्ट्रैटेजी, डू नॉट बी स्वेड बाय कि कोई बुक ले आए और उसको बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ने लग गए. यू आर रीडिंग समथिंग विच इज टोटली इरेलेवेंट फॉर द एग्जाम, दैट विल किल योर चांसेस. अगर बुक्स की बात करें, इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, देन एनसीईआरटी पार्ट 1, क्लास 11 पार्ट 1 एंड क्लास 11 पार्ट 2, यू कैन रीड दिस येलो highlighted chapters, and from NCERT 12 part 2 you can again read these yellow highlighted chapters. इसमें से काफ़ी आपका पूरा हो जाएगा जो मैंने आपको अभी important areas बताए हैं. Still accounting standards would not be covered here in the NCERTs. That's an advanced topic that they teach, not in NCERTs. तो उसको आप कहीं और से कर सकते हैं, right? और उसके अलावा अदर बुक्स अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज, देयर इज अनदर बुक व्हिच इज गुड, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी बाय टीएस गरेवाल एंड एससी गुप्ता. Amazon or Flipkart सब जगह अवेलेबल है. You can also buy this. But again, when you read these books, do not try to read it cover to cover, because that way you will be reading a lot of irrelevant stuff which is not going to give you marks. And our objective is to read and understand only that thing which is being asked in the exam, because we don't have time. हम leisure के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम selection के लिए पढ़ रहे हैं. जाते जाते आपको बता देता हूँ that for UPSC APFC we have 3 courses. One is the master pack, where we are giving you videos, concept notes and MCQs for all the components, maybe geography, history, polity, economy, culture, heritage, stats, IR, social security, labor law, सारे components का आपको full fledged videos और MCQs सब कुछ मिलेगा. Test series plus में you will get chapter wise MCQs for all the components. Along with that you will also get detailed components as in videos and PDFs for 3 components, that is social security, IR and accounting, जो कि पेन एरियाज हैं काफ़ी लोगों के लिए. और तीसरा सिर्फ टेस्ट सीरीज है जहाँ पे आपको सिर्फ हर कंपोनेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे. ठीक है, तीनों कोर्सेज आपकी नीड पे डिपेंड करते हैं कि आपको क्या चाहिए. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कहीं बुक से कर रहे हैं, यू माइट नीड अ टेस्ट सीरीज. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन बुक से कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि आई डोंट हैव क्वालिटी मटेरियल टू स्टडी IR, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग, यू कैन गो फॉर दिस, और यू कैन गो फॉर अ फुल फ्लेज कोर्स हियर. कोर्सेज को अगर आप देखना चाहते हैं इनमें क्या ऑफरिंग्स हैं डिटेल में, so the link is given in the description of this video. We also have a workshop where we are telling you detailed strategy, step-by-step strategy, which we call 6-step domination, in which we are giving you clear roadmap to clear UPSC APFC 2022 exam in 6 steps. बहुत scientifically designed steps हैं in which you will be given full clarity about this exam, कि आप इस exam को कैसे सिर्फ क्रैक ही नहीं रदर डोमिनेट कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू अटेंड दिस वर्कशॉप व्हिच इज बीइंग टेकन बाय कुलदीप सर, who is an institution in itself, you can reserve your seat now. The link to reserve your seat is again given in the description of this video. ये बिल्कुल फ्री है. इस अगर आपके पास टाइम है, so please plan to join this live workshop. I'm sure it is going to change the way you're preparing for UPSC APFC. So thank you guys. I hope this video will give you good insights as in how to approach accounting, and you will thank me for this later when you get selected. Bye bye.